శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ జోగి రమేష్ గారు, అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి మరికొద్ది నిమిషాల్లోనే ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి అమ్మా అందరికీ మా మాస్లో కూర్చున్న వాళ్ళకి వినపట్లేదా? యాక్చువల్లీ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అంటే ఏంటో తెలుసా? వెరీ గుడ్. సౌరభాలను పూర్తి చేసుకునే అద్భుత These are the items what we did. These are the outside. Those 17,000 brisk activities is going outside. The actual photos, daily expenditure is about 30 crores a day. What we are doing. So these are even fans we are getting. Fan light and energy efficient. All the layouts. And he is the MD hit Kosar huge. National houses also, so that the dream of Honorable Prime Minister to see a roof over the head of every individual. కానీ ఇంకా మనం 30 లక్షల మందికి పట్టాస్ ఇచ్చాము కాబట్టి అర్బన్ ఏరియాస్లో మనకు ఇంకా 5 లక్షల మందికి ఇల్లు శాంక్షన్ కావాలి కాబట్టి గవర్నమెంట్లో మంత్రివర్యులని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. Honorable members of Parliament, Honorable Legislative Council members, members like this happened during the year of 2016 because of indoor air pollution. Hence, on 1st May 2016, Housing for all the eligible families, beneficiaries of economically weaker sections, has launched the comprehensive mission Pradhan Mantri. Next, Donkana Govindamma. Donkana Govindamma. Next, Adigari Begum. Next, Muhammad Akbar. Next, Shekhar Mantri Srilata Garu. Next, Sheikh Hasina. Sheikh Hasina. Y. Gauri. Tupakula Lakshmi. दायित्व संभाला कि उनका सपना है कि भारत का हर एक नागरिक जहां भी रहता हो उनके सर के ऊपर एक पक्की छत होनी चाहिए, शौचालय, किचन, गैस सिलेंडर और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई. प्रधानमंत्री मोदी गारू, It is my privilege that since September 3, 2017, I was associated with the Ministry of Housing and Urban Affairs.
3 సెప్టెంబర్ 2017 నుంచి నేను ఈ శాఖగా మంత్రిగా చేస్తున్నాం. Pradhan Mantri Awas Yojana is based on cooperation between the center and the state governments. It is the state governments who have to send us their demand after verifying the eligibility of applicants. Much before I joined the Ministry of Housing and Urban Affairs, the demand assessment done was that a total of 1 crore homes would be required to be built throughout the country. 1 crore. I'm talking about the Pradhan Mantri Awas Yojana in the urban areas. ఇవి అర్బన్ ఏరియాస్ లో అంటే మన आपको ये बताते हुए कि डिमांड असेसमेंट 1 करोड़ थी, पर हमने 1 करोड़ 22 लाख आवास ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए हैं। और इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा आंध्र प्रदेश का है, जहां पे 20,07,700 हमने सैंक्शन किया है। అంటే और मैं आपको, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हैं कि कुछ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी शुरू में कि कुछ लोगों को दिए गए, पर वो जब सरकार बदला हुआ तो उसका नहीं किए। मुझे पूरा विश्वास दिलाया गया कि उनको भी इस पूरी स्कीम का लाभ बहुत जल्दी दिया जाएगा। దీంట్లో और मैं आपको ये बताता हूँ, जब से मैं मंत्री बना हूँ, कोई 5 साल हो गए हैं, और हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, कोई ऐसा शहर नहीं है देश में जहाँ पे मैं जाता हूँ तो मुझे एडिशनल डिमांड नहीं देते। मैंने अभी भी जब मंत्री जी ने, योगेश्वर राव जी ने मेरे को दिया, तो मैंने उनको ये बोला मैं पूरी कोशिश करूंगा। ఇక్కడ ये सब स्कीम्स जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एंकर्ड हैं। ఇవి అన్ని రాష్ట్ర मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दिल का विश्वास है, उनका सपना है कि ये सर्वोदय से अंत्योदय तक, टू द पुअरेस्ट फर्स्ट, जो मैसेज है ये उसको रिफ्लेक्ट करती है स्कीम। ప్రధానమంత్రి आज मैं आपके बीच में आया हूं। हम 8 साल मोदी जी के 8 साल में जो हमारा विकास का काम किया है उसको सेलिब्रेट करने के लिए आया हूं। అంటే ప్రధానమంత్రి మోదీ और मैं आपको ये बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उनकी जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं, बहुत हैं, अगर मैं गिनवानी शुरू कर दूं तो सारा दिन हमको लग जाएगा। అంటే और मेरी जो दूसरी मंत्रालय है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये उज्ज्वला स्कीम एक बड़ी स्पेशल स्कीम है हमारी बहनों और हमारी माताओं के लिए। इन दोनों योजनाओं में जो हमारी महिला हैं उन पे फोकस है। రెండు अभी एक हमारी बहन आई थी जो उज्ज्वला, जिसको कनेक्शन मिला था, हमने उनसे पूछा आप क्या करेंगी, और प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्होंने कहा कि अब मेरे पास समय ज्यादा होगा तो मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाऊंगी ज्यादा समय। ఒక इसमें हमारे भाइयों और बहनों को सिर्फ आवास ही नहीं मिलेगा, ये जो आवास, इसका टाइटल महिला के नाम पे होगा, उससे महिला सशक्तिकरण को भी बहुत लाभ पहुंचेगा। అంటే ఇది ఇల్లు वाला में और कनेक्शन चाहते हैं। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, पहले उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ हमने कनेक्शन दिए थे और बहुत आधे समय से कम में पूरे हो गए। ఇప్పుడు महामारी के दौरान हमने उज्ज्वला बेनिफिट लाभार्थियों को 3 और सिलेंडर दिए मुफ्त। కరోనా और मैं सिर्फ आपको अपने पर्सनल लेवल पे विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आपको लगे और आप हमें बताएं कि कुछ और भी चाहिए तो हम आगे भी ये सुविधा देने के लिए हमेशा तैयार हैं। అంటే మినిస్టర్ గారి పర్సనల్ గా और मैं समझता हूं मोदी जी के 8 साल का जो काम है और जो गरीब कल्याण सम्मेलन है, उसकी सफलता का सबूत यह है कि आप सब इतने भारी శ్రీ హర్దీప్ సింగ్ పూరి గారికి ఇప్పుడు మీరందరూ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన గౌరవ